हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर गेम प्ले। अगर आपको भी शौक है गेमिंग का तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग गेम प्लेस रोज़ लाता रहता हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमने एरिन की सिस्टर अर्सा को फाइनली ढूंढ लिया था, बट अफसोस हम उसे बचा नहीं पाए क्योंकि डरवाल ने उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था। तो इस पार्ट में हमारा काम है कि हम जो कल्प्रिट है डरवाल उसको ढूंढें और उसे पकड़ें और अर्सा को जस्टिस दे पाएँ। तो हमारी स्टोरी अब यहीं से कंटिन्यू होती है। अभी हमें डरवाल को भी पकड़ना है और साथ ही साथ हमारे अभी हीलिस और हेडी जो हमारे मेन विलन हैं उनकी भी हमको स्टोरी ख़त्म करनी है। बट ज़रा 2 मिनट इस जगह की यार खूबसूरती को देखिए यार, कितनी खूबसूरत जगह है, कितने अच्छे पहाड़, बर्फ़ से लदे हुए, पानी बहता हुआ, बहुत ही सुंदर। बट खैर हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, चलना तो पड़ेगा हमें आगे। तो चलते हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन पे। ओके, तो पहुँच गए हम मरीडियन। यहाँ पे हमको भी मिलना है यहाँ के सन किंग से जिनका नाम है अवार्ड। एंड फाइनली उनके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डरवाल को पकड़ सकते हैं। एंड आई गेस एरेंट भी होंगे यहीं पे, तो इनसे ज़रा मिलते हैं और ज़रा बात करते हैं। पहुँचने ही वाले हैं सन किंग के यहाँ। ये रहे सामने एरेंट पहले से पहुँचा हुआ। कुछ गपशप चल रही है आपस में, पूछते हैं इनसे क्या हाल चाल। There'll be time for all of that later. I'm glad you're back. I'm at a loss about Ursa. To learn she lives, then lose that hope seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Dervahl. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Dervahl. The name was Ayland Forgeman. Does that mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Osseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Dervahl used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Errand, wait. Remember that no one hates Dervahl more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Aaron didn't wish to dwell on the details of Ursa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer? She's not the one who's suffering now. You are. She died before you could say goodbye. Is it that obvious? You're right. I'm dwelling on my pain, not just hers. And there's only one thing left that can help. Find Dervahl and bring him before me. He will answer for his crimes. I will. But once this threat to Meridian is dealt with, another one looms. We have to talk about the eclipse. We will. I promise. लगता है जो सन किंग अवार्ड है ये लाइक करते थे अर्सा को, तो इनका भी बहुत दिल टूटा है इस वक्त। ये भी बहुत गम में लग रहे थे बेचारे भाई। एक हर किसी को यहाँ पे एक ना एक ट्रेजिडी सहनी पड़ रही है, बट आई होप इसका एंड एक हैप्पी एंड होगा। तो चलते हैं ज़रा अगली लोकेशन पे। ठीक है, तो पहुँच गए हम वेयर हाउस। मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ पता चलेगा डरवाल की लोकेशन। This is the place. You home, Dervahl? I got a surprise for you.
is डरवाल supposed to पहले kill से ही us. तैयारी करके बैठा हुआ Is it a था bomb? यहाँ पे वो Doesn't look बॉम्ब too छोड़ big. कर गया है अच्छे Big खासे, enough to kill us. तो बहुत ही सावधानी से हमको यहाँ I'll पे shut up. जो भी एग्जामिन करना होगा If देखना I try to पड़ेगा, take it apart, a booby वरना trap will set boom. it off. तो यहाँ तो कुछ है नहीं, एक बार ऊपर जाके देखते हैं कुछ, क्योंकि ऊपर से कुछ ड्रिप कर रहे हो और लिक्विड, Nice. मेरे को लगता Must है be ये भी leaking from फ्यूल something है जो upstairs. बॉम्ब के लिए यूज़ होता होगा। ये देखिए यहाँ पे और फ्यूल पड़ा हुआ, भाई डरवाल ने पूरी तैयारी की हुई थी यहाँ पे, That's a lot of blaze. उसको पता था हम आने वाले हैं। If that bomb downstairs goes off, it'll be just what लगता है Dervahl promised. इसको यहाँ से Smoke will हटाना darken the पड़ेगा sun as the city ताकि goes up in लोगों के लिए भी flames. सेफ हो, क्योंकि नहीं तो यहाँ बाकी there's gotta इनोसेंट be a लोग way to भी है वो stop भी डेंजर में आ जाएंगे। It looks like a wooden bracket. Not very strong. ठीक है, तो यहाँ इसे लगता है फेंकना पड़ेगा इसको। Help me push this out. Okay. Brute force. I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. We did it! Dervahl's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Dervahl said he'd make Avad watch. No way. To do that, he'd have to get it to the palace, and that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Dervahl's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. He tries for the palace. He's finished. वेल अभी के लिए तो एक बॉम्ब डिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो डरवाल है उसका प्लान है कुछ पैलेस पे अटैक करने का, तो हमको भी यहाँ से चलना चाहिए। और Road tracks. ओके, यहाँ पे हमको ट्रैक्स मिल गए हैं, तो आई गेस इसके थ्रू हम फॉलो कर पाएंगे कि कहाँ गया है डरवाल। ये आ गई बाकी आर्मी भी किंग की, ठीक है। अब इन ट्रैक्स को फॉलो करके आई गेस वही है कि ये पैलेस में अब इसने प्लान किया होगा आई गेस सन किंग अवार्ड पे अटैक करने का, तो वही करने से हमें इसको रोकना होगा। There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we under attack? The tracks lead तो inside. पहुंच गए हैं हम डरवाल की One of लोकेशन Dervahl's पे, जो इनका hideouts. घर एक हाइड आउट है। देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। और किसी बिल्डिंग के अंदर है ये, यहाँ पे बहुत ही अंडरग्राउंड कहीं जाके इसने अपना काम वाम शुरू किया। अरे भाई यहाँ से This दीवार must be where टूटी हुई Dervahl है, assembled the detonator. लगता है इधर से इसने कोई दूसरा रास्ता ढूंढा हुआ है जाने का पैलेस में। ठीक है, ज़रा देखते हैं यहाँ से कहाँ जाती है। Dervahl did find a way into the हाँ, palace. ये पैलेस की तरफ जाने वाला है, और ये अलॉय ने भी कंफर्म कर दिया। देख लिया भाई डरवाल ने, लगता हमको अपनी तरफ से तो भाई हम छुप गए, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही शायद उसने देख लिया हो। देखते हैं अब आगे, चलो उसको पकड़ते हैं भाई। वो भी 2-3 बंदों के साथ तो होगा, अपनी छोटी सी आर्मी उसने भी एक रखी होगी। अब उसका क्या सीन है, लेकिन ये फ़िलहाल पता नहीं क्यों मतलब ये सब वो क्यों कर रहा है, ये भी इतना कुछ क्लियर नहीं है। शायद पावर लेने के लिए होगा उसका भी सीन, वो भी शायद किंग अवार्ड को चाहता होगा डीथ्रोन करने की। ओके, ये सामने के बंदे हैं आने वाले आई गेस। कोई है नहीं। ओके है रुको। They know I'm here now. भाई ये चला हमारा AK-47 ये लोग तो गए। हमको भी यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर।
बड़ा ही खुफिया रास्ता है कोई यार ये। दवाल ने भी क्या लोकेशन ढूंढी भाई, इसको मतलब पूरा रास्ता पता है कहाँ से किधर निकलते हैं पैलेस में। ये तो कोई हिडन रास्ता लग रहा है छुप छुपा के बचने का। और ये हम पहुँच गए मेरिडियन के वो जो वरांडा वाला साइड है इस ऊपर। Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench, and choke on the ashes. Something's wrong. It didn't... I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner! ये डवाल उसी मशीन से किंग अवार्ड को टॉर्चर कर रहा है जिससे इसने अर्सा को टॉर्चर किया था। और ये मशीन टूट क्यों नहीं रही है लेकिन ओके ऐसे ठीक है। तो हमने फ़िलहाल की वो मशीन तोड़ दी है। ज़रा देखते हैं किंग की क्या हालत है। ये इसके बेचारे बाकी बंदे बेहोश पड़े हुए। किंग कहाँ पे है? वो रहा। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा बेचारा। What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. Come on, brother. ठीक है तो टाइम आ गया फेस टू फेस डवाल से लड़ने का। This isn't over yet. इसको ज़रा आप दिखाते हैं अपने AK-47 की ताकत। ये तो हो गया ढेर। इसके अब बाकी चमचे हैं ज़रा इनको भी ख़त्म करें। वो रहा एक और। भाई वाह। It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. Well, they're still surprised. भाई ये एक ऐसी डिवाइस है अब इसके पास। मतलब विलन्स के पास तो ऐसी ऐसी डिवाइसेस होती है ना कि मतलब सोच नहीं सकते। अब देखो अच्छा खासा ये मशीन को भी कंट्रोल कर पा रहा है। चलो कोई नहीं यार, इनको भी ख़त्म करें। ये वाली तो गई, अभी दो और हैं। अरे भाई तो फुल ऑन हमला कर रही है मुंह पे आके। इसको भी ज़रा ख़त्म करें। 2 डाउन 1 टू गो। कहाँ पे है भाई तीसरी? 2 ही थे क्या? मेरे को 3। अरे और आ रहे हैं, रुको यार। भाई इसका तो पूरा बैकअप है इस बंदे का। रुको यार, तो सीन हो गया इधर। एक के बाद एक एक्स्ट्रा आई जा रही है। हवाई हमले हो गए यार। हमको भी एक दो यार ऐसा कोई ऑप्शन ये मशीन को उड़ने वाली मशीन को कंट्रोल करने का। ये इन्होंने दिया नहीं हमको बिल्कुल भी। अरे भाई इधर और ज़रा, कहाँ जा रहे हो? ये भी गई भाई। गिर जा। शुक्र है गिरी। और इसको भी ज़रा एक देते हैं डैमेज बढ़िया वाला। ये भी गई। और है क्या? अरे भाई बहुत मशीन्स हैं यार। ये तो कह रहा अभी और आएंगी। स्टॉर्म बर्ड ना आ जाए यार, वो तो बहुत ही टाइम लेती है ख़त्म होने में। भयंकर मशीन है वो तो। ये फिर भी थोड़े इजी होते हैं हैंडल करना। कहाँ गई बाकी? अरे ये इधर इधर आए। कहाँ जा रही है भाई? ज़्यादा दूर नहीं उड़ना है। रेंज में है मेरी यार। ज़्यादा ऊपर चले जाता है तो फिर ये जो ये वेपन है ये काम का नहीं रहता। इसकी रेंज नहीं रही दूर तक। हाँ चलो ये हो गया ख़त्म। ओके आई गेस सभी हमने मशीन्स को कर दिया ढेर।
अब पकड़ते हैं ज़रा इस डरवाल को। As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up! I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. इसी के साथ डरवाल की स्टोरी भी ख़त्म और हमने उसको पहुंचा दिया है जेल में और हमने अर्सा को दिलाई है जस्टिस। तो फ़िलहाल अब अपनी मेन स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हमको आवाज़, एरेंट और एक बार डरवाल तीनों से एक बार बात करनी है। तो ज़रा गुफ्तगू करके आते हैं तीनों के साथ। एरेंट बेचारा अकेला गुमसुम खड़ा है, पूछते हैं क्या हुआ इसको। Aloy, I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do. Right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. Well... I know. You gotta go. Killers to track, machines to master. All before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. And now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I hate to tell you this after everything you've been through, but there's another fight brewing and I need your help. Helis and his fanatics are coming for Meridian. No rest for the weary, huh? Well, don't worry. I'll be there for you. कोई नहीं एरेंट, ऐसे ही अपनी हिम्मत बनाए रखो। चलो फ़िलहाल चलते हैं हम अब डरवाल के पास। तो इसको तो रखा हुआ है जेल में, बहुत सही, इधर ही होना चाहिए था इसको। वेल कुछ खास तो यहाँ पे हुआ नहीं, ऐसे ही फालतू का डायलॉग था। तो अब एक आखिरी बार एक अवार्ड से बात करते हैं जो यहाँ का सन किंग है, देखते हैं उसको क्या है बोलना। Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. Avad, stop. There's something urgent we have to... I know, but please, just listen for a moment. I want you to stay in Meridian. What? Why? Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You're strong, shrewd, capable. I could use someone like you at my side.
It might be worth taking a moment to examine what you just said. You just lost Ursa, a woman who stood at your side and could easily be described as strong, shrewd, and capable. It's pretty clear how you felt about her. And now you're asking me to take her place. Is this a job offer or a proposition? By the sun, you do indeed share much with Ursa, including a withering eye for foolishness. Please, accept my apologies. Seems I'm getting ahead of myself. I need some time to resolve my feelings. But you had something urgent to discuss? Helis is preparing to attack Meridian. It could come at any time. By the sun. Wait a moment. I want Murad to hear this. Aloy, the Sun King tells me that you bring grave news. Please, tell us what you know. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Eren knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. फाइनल बैटल की तैयारी होती हुई शुक्र है लॉय ने क्लियरली बता दिया सन किंग को क्या होने वाला है. अब हमें को इसका पूरा सपोर्ट है भाई. भयंकर फाइट होने वाली है. बट पहले हमको एक और शायद अभी साइड मिशन है. मराठ से बात करनी है. ये रहा वो अपने बाकी सोल्जर के साथ. And do keep me appraised of each new arrival. क्या हो गया भाई? बात कर ले. Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. वेल फिलहाल जो हमारा मेन मिशन है वो है रेस्ट बिफोर द फाइनल बैटल. तो बहुत पास आ चुके हैं हम अपने मिशन के एंड में इस गेम के. ओके बट हमको कुछ साइड मिशंस भी हैं जिसमें हमको चेक करना है कि कैसी प्रिपरेशन है यहाँ पे. तो रेस्ट तो हम बाद में करेंगे. पहले देखते हैं भाई क्या बंदोबस्त किया है इन्होंने वॉर के लिए. सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, क्योंकि भाई कोई चांस नहीं ले सकते हम. हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. भयंकर आर्मी आने वाली रोबोट्स की, हेडिस के साथ और हीलिस की. तो ज़रा चेक करके आते हैं कैसा बंदोबस्त है यहाँ पे. ठीक है, तो हम एक पहले चेक पॉइंट पे तो पहुँच गए. ठीक है, यहाँ पे एक सोल्जर्स हैं. कोई ये कौन है? अरे Aloy. I told you I'd be here. You did, Teb. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry. I'll leave that to the other Nora at the Spire. I brought supplies instead.
These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. It sounds impressive. I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She didn't need to. I know we can do this, Teb. Maybe we can. यार टैब भी पहुंच गया, चलो बढ़िया, सपोर्ट पूरा है भाई अपने को। बट कोई सूट या कुछ वेपन नहीं लाया, मेरे को लगा कुछ सूट वूट देगा वॉर से पहले, कोई खतरनाक एक और आर्मर। बट चलो कोई नहीं, और देखते हैं और भी कुछ है। क्या वेपन है ये? Huh. So you must be Aloy then. I thought there'd be more of you. More of me. Thicker, I suppose. More of a gear wheel, less of a ringlet. Don't get me wrong, you're very well struck. Do all Oseram flirt at the most inopportune times? Inopportune? Battle hasn't even started yet. Petra Forge woman. I hail from the Free Heap. I'll be heading back in the next dust storm. Murad asked me to check over the city arsenal first. Cannons have aged well, but I've cleared their throats so they can really roar. Can I try one? Everybody wants a turn. Have at it then. ठीक है, तो ज़रा इस वेपन को यूज़ करके देखते हैं भाई, क्या क्या बेनिफिट है इस वेपन के। ठीक है, तो अरे वाह, अच्छा भाई। तो जो फाइनली मैं कह रहा था ना, कुछ रॉकेट लॉन्चर टाइप होना चाहिए, मेरे को लगता है अब इन्होंने दिया है जाके। अब जैसे जैसे हम वही फाइनल बैटल के पास आ रहे हैं, अभी ये भयंकर वेपन्स दे रहे हैं। अच्छा, हम इधर से बाहर नहीं ले जा सकते इस वेपन को, यहीं पे यूज़ करना पड़ेगा। अरे यार, यही तो मैं कह रहा था गेम के स्टार्टिंग से, ऐसे वेपन्स दो भाई, थोड़े बूम बाम वाले। भाई साहब, ये वो ना वेपन। चलो बाकी जगह देख के आते हैं। ठीक है, ये दूसरा चेक पॉइंट है। पहला वाला चेक पॉइंट तो सही है, मतलब वेपन्स भी ठीक ठाक मस्त, वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या तैयारी की हुई है यहाँ पे। अरे वॉर चीफ सोना है भाई यहाँ पे तो अपनी। War Chief Sona. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all, but my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my word. सारे कैरेक्टर्स वापस एक साथ आते हुए यही पता चलता है कि भाई अब एंड आ रहा है इस गेम का, क्योंकि अब सब एक साथ आ रहे हैं। ये वाल, ये भी है यहाँ पे। Greetings, Aloy. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called anointed either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. And we must fight a metal devil, because the goddess says, or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. जो कुछ भी हमने अब इस गेम में फेस किया, फाइनली एक एंड उसका दिखता हुआ सामने। और जैसे मैंने अभी कहा था कि सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि हम सबको
मिल के लड़ना है क्योंकि सबके कॉमन एनिमी है। और ये लगता है एरेंड यहाँ पे अपने कुछ सोल्जर्स के साथ डिस्कस करता हुआ। Is that supposed to sound scary or something? I don't know. There used to be cards. Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. Well, that's big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit him like a hammer till he can't hit back! Damn right! You hear that? Nobody's getting past the vanguard. We're here for Meridian. And we're here for you. Thank you, Aaron. Ursa would be proud. Well, only if we win. पूरे जोश में भाई सब अब कसम से मतलब फाइनल बैटल होती हुई। मेरे को लगता है यही वो लोकेशन है जहाँ पे फाइनल बैटल होगी, क्योंकि बहुत ही खुला एरिया और पूरा ऐसा फील आ रही है कि यही वो लोकेशन है जहाँ पे हमको फाइट करना होगा। तो जो हम इतने टाइम से सब पता करना चाहते थे उन सब के हमको आंसर्स मिल चुके हैं, और जो एक हमारी फाइनल बैटल थी हम उसके बस जस्ट एक कदम और दूर हैं। तो चलते हैं वापस अपने घर में, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। तो यहाँ पहुँचते हुए अपने घर के पास पूरी तैयारी के साथ सब लोग पहुँच गए अपनी अपनी जगह पे। मैं तो बहुत खुश हूँ इनकी प्रिपरेशन से, जो जैसा इन्होंने किया है। सब अपने अपने इन्होंने लोकेशन संभाल ली, कहीं से भी अगर अटैक हो तो हम संभाल लेंगे। और ये रहा हमारा रेस्ट हाउस, और कल एक बड़ा दिन। और अभी हमको एक फाइनल बैटल करनी है, लेकिन वो हम बैटल करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही एंटरटेनिंग गेम प्लेज रोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।